Hi Tulsi, good evening. Hi sir, good evening. So how are you? आई एम नॉट फाइन सर क्योंकि मेरा एक जो हाथ है वो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। एक्चुअली मुझे मेरी टाइपिंग की स्पीड नहीं है और मैं एक ही हाथ से प्रैक्टिस कर रही थी। 1 वीक से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रही थी, तो उसकी वजह से मेरा एक हाथ बहुत दर्द हो रहा है, राइट वाला। Try बाकी to सब practice ठीक है। by both the hands. Okay. हाँ वही। Yes. Okay. So we as downtown coders, we are inviting you for your first mock interview. Okay. यस सर। So let's start. So Tulsi, can you just tell me about yourself? Yes, sir. Myself Tulsi Imraj Katre. I am from Gondia, Maharashtra. I have completed my post graduation in microbiology. And my hobbies are cooking, dancing. Okay. So this is about you. Okay. And can you tell me about your strengths and weaknesses? What are your strengths? My strength is I am very hardworking, Okay. and my weakness is I have not stage daring. You, sorry, I didn't get it. Stage daring. I Okay. 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 So you don't have stage daring, means yes. you I fear to express on the stage, or means talk yes, to speak yes sir. on the stage. Okay. Only speak. मतलब सिर्फ बोलने के लिए स्टेज डेयरिंग नहीं है, बाकी डांस के लिए है, मतलब सब चीज के लिए है, खाली मैं स्पीच नहीं दे पाती हूँ और कभी ट्राई भी नहीं Okay. किया। Okay. So if you have got a chance, means if you become a team lead or a project manager after 2 3 years, okay. यस सर। So there you want to speak to your team. You have to go on to the stage, or you means you have a team. So you should lead that team. So at that time means how do you handle that आई विल stage मैनेज fear? दैट टाइम। Okay. And also you told you are a hard working. So can you describe yourself, means how means any example that you did in your past? यस सर। एक्चुअली सर हिंदी में बोलूँ मैं? Yeah, it's fine. Okay. मतलब मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो हुआ है वो अप डाउन से हुआ है, अप डाउन करके Okay. हुआ है मेरा बहुत दूर। और मतलब मैं ग्रेजुएशन में भी बहुत अच्छी थी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बहुत अच्छी थी, मतलब मैं अप डाउन करने के बाद में भी मेरिट लिस्ट में ही थी, अच्छी थी। Okay. Okay. और Okay. मुझे जो भी काम या टास्क दिया जाता है, चाहे फिर वो फैमिली में हो या किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, तो वो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। Okay. Okay. So you are a means topper in your field. Okay. हाँ, माइक्रोबायोलॉजी Yes. में। Yes. So why do you want to change your field? Means why you are coming into this field? Because I think you did a post graduation in that field, so यस सर। you have a lot of knowledge and lot of experience and lot of means uh, attraction हाँ towards that field. यस So why you want to सर। change? एक्चुअली सर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद में मैंने ट्राई किया, लेकिन जो कंफर्टेबल जॉब मिलना चाहिए थी मुझे, और मैं मैरिड हूँ तो अभी तो वो मुझे लगा नहीं। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड तो आपको पता है आईटी में है, तो फिर Yes. Yes. उन्होंने देखे कि मैं ये भी कर सकती हूँ, Okay. तो इसलिए उन्होंने मतलब मुझे एक बार बोला, फोर्स नहीं किया। फिर मैंने हाँ. सोचा कि कंफर्टेबल फ्यूचर के लिए ये है, और हमारे फार्मा में है बहुत अच्छी जॉब्स, लेकिन प्रॉब्लम है थोड़ा, फीमेल के Yes. लिए ज्यादा प्रॉब्लम है जाना आना, फिर हम दोनों का मैनेज नहीं हुआ रहता, इसलिए। Okay. Okay. So that's why you are coming to this field. Means I think यस you सर। don't have interest in this field. Can यस I यस assume सर। that?
यस बट अभी Okay. बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छा Okay. हुआ मैं इधर आई, ऐसा लग रहा है। Okay. Okay. इंटरेस्टिंग है So, बहुत। yes. Okay. So let's move on to the next question. Okay. यस। So if we hire you, so where do you see yourself in next 2 to 3 years? पता नहीं Okay. सर, क्योंकि इतने इतने ज्यादा जल्दी यहाँ पे ये हो रहा है ना, मतलब Growth. बहुत, हाँ ग्रोथ डेवलपमेंट बोलो, पर्सनालिटी में, बाकी सब चीज में, मेंटेलिटी में। Okay. मेरा जो एजुकेशन है वो दूसरे इसका है, और अभी जो मैं Yes. जा रही हूँ क्रॉस फील्ड में जो मेंटेलिटी रहती है वो बहुत अलग रहती है, और शायद मैं एडजस्ट हो जाऊँ पूरी तरीके से, या फिर थोड़ा टाइम लगे मुझे। Yes. Okay. So, Tulsi, can you tell me what is your biggest achievement in your life till now? अभी तो कुछ नहीं है सर अचीवमेंट, मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में। Okay. बहुत कुछ करना है एक्चुअली फ्यूचर में। Okay. And can you tell me uh, means uh, if you got a problem, or how do you face, or how will be your approach towards the problem to solve the problem? सर इस फील्ड में प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम? कोई भी मतलब अभी तक एनी जितने हाउ भी प्रॉब्लम। तुमको हाँ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो तुम उस अप्रोच कैसा करती हो, मतलब हाउ डू यू हाँ, अप्रोच टू दैट? सबसे पहले तो सर मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मतलब बहुत चीजों को अंडरस्टैंडिंग करके फिर ये करती हूँ, चाहे फिर हेल्थ से रिलेटेड हो। एक्चुअली मुझे कोविड हो गया था, तो मतलब किसी को नहीं लग रहा था कि मैं संभाल पाऊंगी, लेकिन मैंने संभाला सब। और मतलब मैं बहुत अलग हूँ, ऐसे मैनेजेबल हूँ, सब कुछ मम्मी के यहाँ पे भी सब, मतलब बहुत अलग हूँ। तो मैं ऐसे इजीली बड़े बड़े टास्क ऐसे ही कर लेती हूँ लाइफ में, आज तक भी बहुत। और मेरे पापा एक्चुअली बाहर जॉब करते थे, तो सब कुछ मैनेज मैंने ही किया है पहले, तो अब आदत हो गई है। और हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही Yes. अच्छे हैं, तो अब तो Yes. कुछ मतलब सब कुछ इजी लगता है। Okay, that's great. Or means if do you like movies, watching movies? हाँ, यस सर। So can you tell me which movie you saw recently? अभी तो बहुत दिन से कोई देखी नहीं हूँ, समय नहीं मिला है, पर So which is your favorite? फेवरेट मूवी वो जो मंगलयान वाली थी वो, और सुबह वो शादी में जरूर आना। Okay. Why? बिकॉज उसमें कुछ है ऐसा जो मतलब बहुत सोचने पे मजबूर कर देता है इंसान को, कि मतलब लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी वो। Okay. और That's उसमें जो हीरोइन ने प्रैक्टिकल सोचा है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। okay. Okay. That's nice to hear. Okay. So we'll come to end to the HR interview or personal interview. Now we'll Yes, conduct technical interview. Okay. yes. Okay. So we'll start. Okay. Okay. So Tulsi, what is HTML? Sir, HTML is a hypertext markup language. Mm, HTML जो लैंग्वेज है वो वेब पेजेस को फॉर्म करने में यूज होती है। Yes. Okay. And what is attribute? Attributes, meta informations are involved,
meta information are present in web pages for bind to the browsers Okay. is called attributes. Okay. And what are the examples of attributes? Uh, Which are the uh, attributes I will give you a hint. Like style is attribute. style, span. No. No, sir, no, sir. SRC. Style, paragraph. No. Attribute means the inside the elements like href for anchor tag. Yes, sir, yes, sir. HREF, relation. Uh, Yes. And HREF, relations. Image. image के लिए SRC. SRC SRC is attributes. alt is an attribute. Alt Yes. attributes. Okay. Class is also an attribute. Means which Yes, is sir. wrote inside the element. Okay. Okay. Yes, sir. Okay. So we'll move to the next question. Okay. How many types of lists are there? So two types of list, unordered list and order list. Yes. And what is the difference between HTML4 till HTML4 versions and HTML5? Now that we are using HTML5, so what are the differences between them? I don't know, sir. Okay. Okay. So what are the differences between inline elements and block level elements? Yes, sir. In block elements, they started from new lines, Yes, right. Correct. and in inline elements, sorry, sir. In block elements, they are consume all width of Yes, content, full width. Full width. full Yes. width, full width, and in inline element, they are not start from new line. Yes. Right. And they are Examples you can tell. Examples. sir, span is a block element. No. Span is No, inline. span is an inline element and div is a block element. Yes, right. Correct. Okay. And also margin and padding is Yes, sir. Margin and padding also block element. yes, it is means uh, it is applied to the all sides of the block level elements. Yes, sir. But in Yes, inline elements, it is applied only at the left and right. It is not applied to the top and bottom. top to bottom. Yes. Yes, yes. Okay. So we'll move to the next question. So Tulsi, what is CSS? CSS. Sir, CSS is a cascading style sheet. Yes. CSS is a use for style, design for web pages. Yes. Style and design the HTML elements or web pages. Okay. Web pages. Yes. Okay. So, uh, what are the properties that we use for like for giving or I want to means I want the text to be in the center. Which property I will use? Text align. Yes, text align. Text aligned center. Proper Yes, value right. center. Center. Yes. Yes, sir. And so, what is float? Do you know float?
फ्लोट, यस सर, फ्लोट हमने देखे थे ये प्रॉपर्टीज। Float left, float right. Okay. सर Yeah, जो I think पैराग्राफ को लेफ्ट या राइट साइड देने में, हाँ, yes, left. यस सर, We can align left or right. लेफ्ट टू राइट। Yes, yes. Okay. And what are the pseudo selectors? Pseudo elements and pseudo classes. Which are the सूडो, pseudo selectors, pseudo elements, and which are the pseudo classes? यस सर। सर टाइप्स ऑफ फर्स्ट क्लास, फर्स्ट टाइप ऑफ क्लास, लास्ट टाइप ऑफ क्लास, First, first child, last child. You are saying. हाँ, फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड, यस सर। देन nth number of These are child, pseudo selectors, pseudo yes sir। elements, and pseudo classes. Pseudo elements. I will give you a hint. After, before, you know. Yes sir, after, Yes. before. So that are the These pseudo. are element. Yes, right. Yes, And sir. which are the pseudo classes then? Active, hover, focus. Active, hover, focus, yes sir। Yes. Hover, visited, Yes, right. Yes. So these are the pseudo classes. Okay. Okay. We'll move to the next. So can you tell me how to create a table? सर उसमें टेबल टैग का यूज होगा, TD, देन Yes, उसमें table रो tag. होगी, यस सर, TR, Yes. TH, Step by step. Means I want the table. I took table tag. Then I want heading. So for heading, which tag I will use? H1, No. head, Table heading. table heading, TH, Yes. yes sir, Table head, T head, and table inside head, that yes sir, TH. table, then close table, TD, No. Table, then T TH, head, inside that TH. Yes. yes sir, And inside T body, we use T body, yes sir, inside that we use table rows. And inside that table TD, rows, TD. yes sir, Yes. table rows, Yes. TR. Yes. Okay. So in how many ways we can apply CSS to In our table? HTML element? No. In for our HTML elements, in how many ways are there to apply CSS? Sir, for using link, Yes, but I will give you a hint. Internal, yes sir, internal, yes. external, and Yes. embedded. Internal, inline, internal. Inline and embedded. Yes. Inline, internal, external. Internal को ही हम External. embedded. Embedded बोलते हैं, yes. Yes. And which is having a highest precedence? Sir, internal.
Inline. Inline. Okay. Inline, then internal, then okay. So what is a descendant selector? You know? Descendant selector. Relations selectors. Yes, relation is there Relational in, selectors. yes, means parent child selection like that. That is called relational. And you know direct child, Yes, sir. which symbol we use for Direct. direct child? Uh, पता नहीं. If there is a class, inside that I want to select a paragraph tag, then Yes, sir. dot para, then for direct child, Curly bracket. no, for direct child we use greater than symbol. Inside. Yes, sir. I think you don't know, means didn't study this. Okay, okay, we'll cover that. Okay, so in how many ways we can select a HTML element? This is the last question. How many ways? If I want to select a HTML element like paragraph or some HTML elements in our HTML file, into CSS we have to select and apply a style on that. So how will we select it? Uh, By using, you know this answer. select. Yes. Control. नहीं, अभी आप कैसे सेलेक्ट करते हो? अगर आपको पैराग्राफ चाहिए, आपकी CSS फाइल में आपको पैराग्राफ को देना है स्टाइल, कुछ भी CSS, तो कैसे लिखते हो? सर स्टाइल CSS फाइल में P. हाँ, तो वो P क्या है? टैग सेलेक्टर. यस सर, टैग सेलेक्टर. सो और कौन से दो? और डॉट दे के लिखते हैं हम, डॉट प्यारा या डॉट क्लास सेलेक्टर. क्लास सेलेक्टर है. और एक है आईडी सेलेक्टर, हैश आईडी सेलेक्टर है. हाँ सर, आईडी सेलेक्टर. Yes. Okay. So by this we'll come to end to this interview. Okay. So do you have any question for me? No sir. Okay. Okay, then we will